complex chip in the world, but for somebody else. Now is the time when we should design our own products. From being a back office, now we are transitioning to becoming a product nation. From being a GCC, we are now transitioning into having our own products, our own IPR, our own contribution to the world as complete chipset. Along with comes the entire supply ecosystem, which is close to 16,000 items go into making a chip. I was looking at the periodic table. Science wale kaun hai yahan pe? Quite a few, right? Periodic table. Sare ke sare elements are used in this. Practically every element, maybe some of them maybe not used, but practically every other element is used in chip making. And this goes into everything that you see here requires a semiconductor, right? This guy would be needing something like 30,000 chips, right? Vande Bharat. This would be looking at something like 3,000 or 4,000 chips. That's the magnitude of semiconductor requirement. We are very fortunate to have a very visionary Prime Minister who has given us a clear mandate of using technology. I gave these 3 examples today to share with you where we are today, what we are thinking in the coming days. In Prime Minister Modi ji's 3rd term, India will emerge as a major product nation, as a major manufacturing hub, and a major technology power. Thank you. I just wanted to say thank you to the Minister. Mr. Minister, we talk about how the country is changing. That we have such a qualified person like you making, it's amazing. The kind of talent that has been brought into the government by the Honorable Prime Minister, but also the honesty, integrity and professionalism with which the Honorable Minister has made this presentation for all of us. I think he deserves a standing round of applause for that. Thank you, Ashwani ji. Thank you. All the best to you, sir. Thank you so much. Thank you. I am very, very happy to announce that Niva Bupa Health Insurance has come on board as Republic TV's studio partner. Niva Bupa Health Insurance is the fastest growing company among standalone health insurance players in India. It has also provided health insurance coverage to 1.1 crore people in India and settled over 15 lakh claims, processing one claim every 60 seconds. So we are delighted to be partnering with them. साथियों, आप भी जानते हैं कि ये समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है, उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी। पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है। मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं, मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं। भारत ने ये साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स के साथ ही गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है। साथियों,
आज एक वैश्विक जिज्ञासा, ग्लोबल क्यूरियोसिटी है कि भारत ने ये कैसे किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा सिक्के के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने देश की जरूरतें भी पूरी की और सपने भी पूरे किए। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने समृद्धि पर भी ध्यान दिया और सशक्तिकरण पर भी काम किया। जैसे हमने कॉरपोरेट टैक्स में रिकॉर्ड कमी की, लेकिन हमने ये भी सुनिश्चित किया कि पर्सनल इनकम पर भी टैक्स कम से कम हो। आज हम हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे के निर्माण पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम गरीबों के लिए करोड़ों घर भी बनवा रहे हैं। उन्हें मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन की सुविधा दे रहे हैं। हमने मेक इन इंडिया की पीएलआई स्कीम्स में छूट दी तो किसानों को बीमा से सुरक्षा और आय बढ़ाने के साधन भी दिए हैं। हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अगला सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल मेरा यह है कि पिछले 5 साल में गृह मंत्रालय ने एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई की है। होम मिनिस्ट्री का अपना डेटा है कि 16,000 एनजीओ जो है उनके एफसीआरए लाइसेंस को कैंसिल किया गया है। उसके साथ साथ टेरर फंडिंग, एनजीओ फंडिंग पर रोकने की कोशिश हुई है, लेकिन शायद पूरी सफलता नहीं मिली। इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है? एक तो जो ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड सेल होते हैं, नेक्सस है, इसके फॉर्मूले को तोड़ने की कोशिश है या एनजीओस को टारगेट किया जा रहा है, वो कहते हैं। तो इस पर अगर आप देखिए अपनी अर्णब जी, आप दो चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। अच्छा, एफसीआरए को हमने कानून में परिवर्तन किया। कानून को में परिवर्तन करने का हमारा उद्देश्य था कि एफसीआरए का उपयोग कर विदेशों से चंदा लाकर, डोनेशन लाकर इस देश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास नहीं होना चाहिए। एक, सेवा के लिए अगर कोई पैसा भेजता है, सेवा कार्य के लिए करता है, व्यक्ति समूह के उत्थान के लिए भेजता है, तो उसका स्वागत है। हमने कठोर नियम बनाए, ऑडिट कंपलसरी किया और ऑडिट को रेगुलर किया। इसके आधार पर ये सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं। कुछ लोगों ने तो 16,000 में से 12,000 लोगों ने स्वतः ही कैंसिल करा दिया। भारत सरकार ने नहीं किया है, वो स्वतः विड्रॉल का अर्जी डाले हैं। तो 4,000 ऑडिट के आधार पर कैंसिल किए हैं। तो जो लोग हाय तौबा करें, उनको मेरा यही कहना है कि कानून की परिधि में रहकर कोई भी व्यक्ति कितना Instead of celebrating the contribution of immigrants to our country, to our economy and our communities, Donald Trump calls them vermin, poisoning the blood of America. No one should ever doubt where my heart is. Unlike Donald Trump, on my first day in office as president, I introduced a comprehensive plan to fix our immigration system, secure our border, provide a pathway for citizens, for dreamers and their families, farm workers, essential workers who helped us through the pandemic and are part of the fabric of our community. Because unlike Donald Trump, I know who we are as Americans. He came to office determined to see Roe v. Wade overturned. In fact, he brags about it. Well, he got his wish, and states are passing bans that criminalize doctors, forcing rape and incest victims to leave their states to get help. And now, MAGA Republicans and Donald Trump want to pass a national ban on the right to choose. Well, hear me loud and clear. Not on my watch. और प्रधानमंत्री जी,
हर भारतीय के पास हमेशा सपने थे, हर भारतीय परिश्रम करता था, लेकिन आपके आने के बाद बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट यू हैव क्रिएटेड, दैट कंपनीज एंड ड्रीम्स लाइक रिपब्लिक कैन कम टू लाइफ एंड बिकम अ रियलिटी। कुछ साल पहले जब मैंने कहा था ये दशक भारत का है, लेकिन ये भी सच्चाई है, आज दुनिया ये कह रही है ये दशक भारत का है। अमित शाह जी, बंगाल में ही नहीं पूरे देश में गृह मंत्री जी सीएए कब लागू होगा? क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कभी भी लागू हो सकता है और आपका बयान भी आ चुका है कि सीएए लागू होकर रहेगा, तो इस पर कोई टाइमलाइन आप कह सकते हैं कि कब होगा? मैं फिर से कहता हूं, सीएए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले होगा। इस चुनाव के पहले होगा, इस चुनाव के पहले होगा। ये बहुत बड़ी बात कही है आज। मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हाहाकार हो गई। आपने जो बात अभी कही है, गृह मंत्री जी ने बहुत बड़ी बात हम सबके सामने प्रणव जी, तालियां बज गई, कोई धमाका नहीं है, ये बात मैं 10 बार बता चुका हूं। नहीं, मगर आप चुनाव के पहले सीए लागू होगा, इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। फैंटास्टिक। तो नोटिफिकेशन बस आने वाली है, फिर आपको लगता है नोटिफिकेशन तो बस आने वाली है? देखिए, हमें तो ब्रेकिंग न्यूज चाहिए ना। अब आपने इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है, आदत से मजबूर हम भी हैं। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और मुझे लगता है सब लोग इस पर जरूर बात करेंगे और इसका प्रभाव क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर आप संक्षिप्त में इस पर कुछ कह सके तो। देखिए, सीए कानून कोई नई बात नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी कई चीजों को भूल गई है। मत बैंक की लालच में, वोट बैंक की लालच में कई चीजें भूल गई है। जैसे यूसीसी, जी, संविधान सभा का वादा था। इसी तरह से जब देश का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश से लाखों की संख्या में हिंदू, बौद्ध, सिख शरणार्थी आ रहे थे और मार काट हो रही थी। कांग्रेस के ही नेताओं ने, देश के नेताओं ने एक वादा किया था, आप धैर्य रखिए, आप कभी भी यहां आएंगे, आपको ये देश स्वीकार करेगा, आपको नागरिकता देगा। इस वादे पर सभी लोग वहां रहे जी। उनके पर अनेक प्रकार के अत्याचार हुए, धार्मिक प्रताड़ना हुई, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया, उनकी महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया गया। वो लोग बदले के लिए भारत की शरण में आए और अगर आज भारत अपने वो वादे को जो 15 अगस्त 1947 में किया गया है उसको याद नहीं करता है तो वो ठीक नहीं होगा। करोड़ों लोग इस देश के अंदर नागरिकता के बगैर रह रहे हैं, जो वहां से प्रताड़ित। मुझे कोई बता सकता है, ममता बनर्जी बता सकती है कि वो कहां जाए, कहां जाएंगे वो लोग? वहां उनकी सुरक्षा नहीं है, उनकी महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है, हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम भी शरण न दे जी, हम भी उनका स्वागत न करें। भारत में स्वागत है, भारत उनको नागरिकता की भी देगा और मेरे आपके जितना अधिकार भी देगा और स्वागत करेगा। साथियों, रिपब्लिक टीवी का सवालों के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। नेशन वांट्स टू नो। और ये कहते कहते आप लोग अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं। पहले देश में सवाल होता था
कि आज देश कहां है, देश किस हालत में है। लेकिन देखिए, बीते 10 वर्षों में ये सवाल कैसे बदल गए हैं। 10 साल पहले लोग बोलते थे, हमारी इकोनॉमी का अब क्या होगा। आज लोग पूछते हैं, हम कितनी जल्दी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। 10 साल पहले लोग बोलते थे, हमारे पास ये विकसित देशों वाली टेक्नोलॉजी कब आएगी। आज लोग विदेशों से आने वालों से पूछते हैं, आपके यहां डिजिटल पेमेंट नहीं होता है क्या। 10 साल पहले लोग नौजवानों से कहते थे, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे। आज लोग नौजवानों से पूछते हैं, तुम्हारा स्टार्टअप कैसा चल रहा है। 10 साल पहले एनालिस्ट पूछते थे, इतनी महंगाई क्यों है। आज यही लोग पूछते हैं, पूरी दुनिया के संकट के बाद भी भारत में महंगाई नियंत्रण कैसे है। 10 साल पहले पूछा जाता था, विकास क्यों नहीं हो रहा। आज पूछा जाता है, आखिर हम इतनी तेजी से विकास कर कैसे रहे हैं। पहले लोग पूछते थे, अब कौन सा घोटाला निकला। आज पूछा जाता है, अब कौन से घोटालेबाज पर कार्रवाई हुई। पहले मीडिया के साथी पूछते थे, कहां है। I am very, very happy to announce that Niva Bupa Health Insurance has come on board as Republic TV's studio partner. Niva Bupa Health Insurance is the fastest growing company among standalone health insurance players in India. It has also provided health insurance coverage to 1.1 crore people in India and settled over 15 lakh claims, processing one claim every 60 seconds. So we are delighted to be partnering with them. Hello and welcome. You're watching Live and Breaking with me, Gini Nurula. Let's take a look at our top headlines. It's a super Sunday. Prime Minister Modi to visit Akhilesh's stronghold Azamgarh ahead of the Lok Sabha polls. In a big boost to the aviation sector, Prime Minister to inaugurate 15 airport projects worth rupees 10,000 crore across the country. In an unprecedented move, just weeks before the polls, Arun Goyal tenders his resignation as election commissioner. The poll panel has now 2 vacancies. 10-day remand of Mamata-backed mafia Don Shah Jahan ends today. CBI officials set to produce the accused at Bashirat Court at 12 p.m. DMK finalizes seat-sharing formula with Congress. Congress gets 9 seats in Tamil Nadu as DMK repeats 2019 formula. Chandrababu Naidu officially rejoins NDA 6 years after snapping ties. Sources say BJP to contest on 6 Lok Sabha seats, TDP on 7 seats in Andhra Pradesh. News just coming in that the Enforcement Directorate has arrested RJD Rashtriya Janata Dal leader Subhash Yadav after 14 hours of raids by ED officials. Subhash Yadav apparently is a close aide of Lalu Yadav. He was arrested in connection with a probe into illegal sand mining. The ED conducted raids at 8 locations linked to Subhash Yadav under the Prevention of Money Laundering Act. Now, the ED has arrested Subhash Yadav, who is a close aide of RJD chief Lalu Prasad Yadav,
late Saturday night in connection with the alleged illegal sand mining case, which is linked to money laundering case. The arrest was made following the raid at Subhash Yadav's premises and several other places in Bihar's capital city, Patna. My colleague Akhil is joining us to get us the latest updates. Very good morning to you, Akhil. Akhil, of course, we understand that the Enforcement Directorate has arrested RJD leader Subhash Yadav. Of course, this is in connection with the sand mining case and related to the money laundering case. Now, did the police find any incriminating evidence in this case? And for how many days is he under police custody? If you could take us through the latest details. Yes, the latest detail that we are getting right now that that Subhash Yadav, who is a close aide of RJD Supremo Lalu Prasad Yadav, has been arrested by the Enforcement Directorate team. And Enforcement Directorate team has raided not only just Subhash Yadav's place. Apart from that, they have also raided several other places, approximately 7 other premises, which is some link to Subhash Yadav. And right now, what we know from our sources that approximately 2 crore cash has been recovered during these raids. And right now, he's in the custody. Subhash Yadav in the custody, who is a close aide of RJD Supremo Lalu Prasad Yadav. Yes. Right, Akhil. Of course, the money laundering case stems from certain FIRs filed by the Bihar police earlier. Now, could you take us through what was there in these FIRs? See, the latest development hasn't come out right now because the investigation is on a very preliminary stage. But the case is related to the land mining incident in which he has taken some money out of it. That's why the probe was going on in this matter in land mining case. Right, Akhil. Thank you for getting us those details. Of course, we'll come back to you as and when more details emerge in this case. Now, moving on to other news. Karnataka Minister K.N. Rajana's public endorsement of Uttar Pradesh law and order situation and the government led by Chief Minister Yogi Adityanath signals a clear defiance of official stance held by the Karnataka Congress. This move by Rajana reflects an open departure from the party's position within the state. Now, Karnataka Minister K.N. Rajana's public endorsement of Uttar Pradesh law and order situation and the government led by Chief Minister Yogi Adityanath is, of course, signaling a clear defiance. We are trying to cut across to my colleague to get ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ್ದು ಯಾವನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಿ, ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ UP-ನಲ್ಲಿ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಾನೂನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಮಾಡ್ತಿಲ್ವ ಅವರು? ಈಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಅದು ಮಾಡಲಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ್ದು ಯಾವನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಿ, ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ UP-ನಲ್ಲಿ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಾನೂನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಮಾಡ್ತಿಲ್ವ ಅವರು? ಈಗೆಲ್ಲ ಭಯ ಬಿದ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಅದು ಮಾಡಲಿ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ my colleague Prajwal is joining us from Bengaluru. A very good morning to you, Prajwal. Of course, we heard that Karnataka Minister K.N. Rajana praising the UP's law and order situation and endorsing Yogi Adityanath's government. Now, does this mean a clear defiance of the official stance held by the Karnataka Congress? Prajwal.
This particular meeting, there was a meeting which was conducted between the reporters as well as K.N. Rajana in Tumkuru, at which point of time the pro-Pak slogans which was raised in Vidhan Sauda was questioned, at which point of time K.N. Rajana has stated that those who are cheering for Pakistan should be shot dead, and there is absolutely nothing wrong in that. And he's also suggested that Karnataka should have the Uttar Pradesh model of law and order enforcement to curb anti-national activities, because he says that in Uttar Pradesh, houses and buildings of the accused in rioting cases have been demolished, though there are no legal sanctions to this. So therefore, he states that this act has helped in curbing rioting and other anti-social activities in UP. And if the same is followed in Karnataka, there is absolutely no problem, and the cops could in fact work more effectively to curb such anti-social activities as well. And there should be peace in society to achieve progress in various fields. And if it is disturbed, it will affect the growth of the state, is what he's gone on to add. Meaning to state, indirectly he says that the Yogi model of governance, the Yogi model of administration, especially bulldozing houses, raising down houses, has definitely worked, and the crimes have reduced significantly in Uttar Pradesh, and he is indirectly hinting that this should also be followed in the state of Karnataka. But that also does not mean that he is defying the party, but he states that largely this is his opinion for the Karnataka government in the state to follow this. Why he is going on to here, Vinny, is because the Congress is on a back foot since these pro-Pak slogans were raised in Vidhan Sauda, and even after the Rameshwaram Cafe blast as well, because he stated that no sort of conclusion should be made until and unless all the reports are coming out in detail as well. So therefore, he states that ahead of the elections, this could turn out to be a huge problem for the Congress party, and that they should know where to go on and treat their line. Even though he is Siddaramaya's close man, he is now gone out to give such statements which has started raising eyebrows within the Karnataka government in the Congress party here in the state. Of course, Prajwal, these are very strange statements. But Prajwal, stay with us. In yet another news coming from Karnataka, a bomb threat targeted the Ram Mandir in Belagavi, with the threat letters discovered at the Ram Mandir in Nipani town. Subsequently, security has been intensified at the temple premises. To bolster surveillance, 14 CCTV cameras have been installed in the temple area. The local police have filed an FIR in connection with the bomb threat incident. Now, going back to you, Prajwal, on this, we understand that there is a bomb threat yet again in Karnataka, and this time it is a temple. Security has been beefed up, and could you take us through more details that you have gathered on this? We are getting to understand that some individuals who have not been identified have left two threat letters. Two threat letters outside the Ram temple in Nipani's town, which is situated in Belgavi district. And it is being learnt that there were threat letters to blow up the Ram temple using explosives on the 7th of Feb as well as on the 28th of February as well. And therefore, they stated that the bombs will be placed between March 20th and 21st, where explosions will be conducted, where explosions will happen as well. So therefore, taking this seriously, the Belagavi has now gone on to install 14 CCTV cameras and also give 24/7 security as well. And now the police are still going ahead and trying to trace this particular letter, which has been written in Hindi. And also more of, they had also gone on to state that, these messages, some of these messages were bearing the phrases of Allahu Akbar and also contain threats of large-scale bombings at the Ram Mandir temple in Belgavi's Nipani, which is visited on a day-to-day basis by thousands of devotees of Lord Ram as well as Lord Hanuman. And also considering the strategic location of this particular Ram Mandir, which also houses a Hanuman Mandir adjacent to it, receives a lot of people not only from Karnataka and Belgavi, but also from across the state. Especially people will come in from Maharashtra, Pradesh and Telangana too. So therefore the security has been heightened. In fact, Anand Solpurkar, who is a trustee of the temple, has also spoken and has stated that there were some condemnable statements which was written in the letter, and they had gone on to inform the police because they initially thought that this threat which is coming in is somewhat fake and did not take it very seriously on the first time when it was written. But on the 28th of Feb, when yet another threat letter was found as well, that is when the cops considered that this particular situation will
be taken, will be taken in seriously, and therefore the SP has given protection 24/7, and also CCTV cameras has also been installed, and stated that if there is any need for additional security and forces, then it will be deployed. Also, all the devotees as well as the temple administration have been instructed to notice if there are any sort of suspicious bags or objects that is being kept around, or if any people who are walking suspiciously will be taken immediately in and will be interrogated by the cops. Right. Thank you, Prajwal, for that. Of course, we'll come back to you as and when more details emerge on this story. Now, threat letters received to blow up the temple in Belgavi. Of course, police is investigating as to who had written those letters. Moving on to other story now. Election Commissioner Arun Goyal resigned on Saturday, days before the expected announcement of the schedule for the Lok Sabha elections, most likely to be held in April-May. His resignation was accepted by President Draupadi Murmu. It was not immediately known why he stepped down. No official communication regarding his resignation. Now, viewers, his resignation has come not just days ahead of Lok Sabha poll announcement, but also within a month of Anup Pandey's retirement as election commissioner, leaving Chief Election Commissioner Rajiv Kumar alone in the three-member commission. Arun Goyal has sent his resignation to the president, and which has been accepted by the president. The Congress politics is also abuzz following the resignation of Chief Election Commissioner Jairam Ramesh has raised questions about the C's decision to resign, speculating whether Arun Goyal will now contest on a BJP ticket. Ramesh's inquiry adds to the growing uncertainty surrounding Goyal's unexpected resignation. Meanwhile, KC Venugopal expresses that the entire nation is anxious about the developments. We have a couple of reactions coming in on this. Let's listen in. It is quite shocking. Just before the election declaration, Election Commission has been resigned from that post. Now only one Chief Election Commissioner is there to conduct the election. What is happening in this Election Commission? The entire country is anxious. I think that this government of India didn't want a free and fair election at all. Earlier they changed the Chief Justice from the selection body of the Election Commission and Commissioner. Time to slip in a very short break. Coming up on the other side, DMK finalizes seat sharing formula with Congress. Congress gets 9 seats in Tamil Nadu as DMK repeats 2019 formula. The nation wants to know whether it's true that you are fighting the next Lok Sabha elections from Mumbai. So let's start with a political question. In fact, at the WTO Director General gave it away when he said, why is Piyush Goyal not come for WTO yet? So he says, you see, he's very busy. He is fighting an election. So they've announced it even before the BJP at the WTO. So maybe you want to tell me that. We've been fighting elections ever since the day I was born, probably. The Lok Sabha election. But I think these are decisions the party takes. We have a party parliamentary board which makes all these decisions. I can only tell you I would love to fight the election. Oh, great. If the party gives me an opportunity. Great. That's a good headline to start with. Piyush Goyal says he's going to be excited to fight the election if the party gives him an opportunity. Himantada, I must first congratulate you for being one of the rare politicians who can get a post-lunch audience of this size. It's incredible how popular and viral you've become. It's actually incredible. I mean, you know,
Now, earlier you and I, when we spoke in Hindi, people would make fun of both of us because our Hindi is bad. Now they expect us to speak in Hindi. But Ibonadav, how do you handle your popularity? At a national level, wherever you go, you get crowds when you go to Andhra Pradesh, you get crowds when you go to Uttar Pradesh, and of course you get crowds when you go to Bengal. I think my Hindi attract people. तो हिंदी में भी बात करेंगे आज. नहीं ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए एकदम. I have had the privilege of knowing you personally for a long time and I have watched your career. Now you come across and everybody who's listening here, बड़े ही balanced व्यक्ति हैं, ठीक से प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी है, असम की इकोनॉमी बढ़ रही है. मैं भी हिंदी में ट्राई कर रहा हूँ, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो बता दीजिए. होना चाहिए मिस्टेक थोड़ा. मैं दिल साफ है, जबान साफ नहीं हो मगर दिल साफ है. ये कानून में क्या लिखा था कि छोटे बच्चा का भी विवाह होते हैं तो जो काजी बोलते हैं दे कैन रजिस्टर द मैरिज एंड दैट मैरिज बिकम लीगल. ये कानून में वो लिखा हुआ था. हमने जो बाल विवाह का खिलाफ काम किया, हाई कोर्ट एनलर्ज मेनी ऑफ देम ऑन बेल सेइंग दैट इन मुस्लिम रजिस्ट्रेशन एक्ट registration of child marriage is genuine and it is a bona fide, it is legal, so you cannot arrest. So then हमने जाके कानून को जो असेंबली ने पारित किया था उसी असेंबली से हमने खारिज किया और बाद में खारिज करने का बाद सबसे तो मशवरा होते ही रहता है. खारिज करने के बाद आप बात करेंगे. ये ऐसी बात हो गई कि 370 निकाल दीजिए, उसके बाद आप बुलाइए हुर्रियत को. बात कीजिए, पहले बात मत कीजिए, कंफ्यूज हो जाएगा. अब व्यूअर्स, दिस इज, I mean, we are talking about Bharat, the next decade. आप कभी भी जब निर्णय लेना होता है, अगर 370 कानून को खत्म करने का पहले अमित शाह जी सबका साथ चर्चा करते थे, क्या 370 विलुप्त हो जाते थे? ये कोई बात आप कन्विक्शन और प्रिंसिपल में चलो कि ये देश में चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए. That is the main conviction. Once you have that conviction in your mind, रास्ता में जितना भी रुका है हटा के चला जाओ. और कोर्ट में चली जाए, बात कोर्ट में चली जाए तो कोई इशू नहीं है. आपको कन्विक्शन, कोर्ट्स तो हर चीज में घुस रहे हैं आज. नहीं, देखिए कोर्ट का अपना एक अंदाज है. हम कोर्ट का बात कोर्ट में डिस्कशन कर लेगा, आपको तो वो कोर्ट में चलेगा. बट आपको एज ए, मेरा जो मानना है कि हमारा पहले कन्विक्शन होना चाहिए कि 370 जाना चाहिए. फिर अगर आप वो कन्विक्शन में फार्म है तो कैसे जाना चाहिए लोगों को मत बुलाइए. खत्म करने का बात बुलाइए, भाई खत्म कर लिया, अभी बात करो कैसे क्या आगे करना है. This is a remarkably unique approach. नहीं, वही न्यू इंडिया है. This is the new India. This is न्यू इंडिया. यही न्यू इंडिया है. I tell you, this is the different level of political incorrect. राहुल गांधी जी आपके दोस्त आए आसाम में, और आसाम आपने कुछ, आपके झगड़ा हो गया, आपने उनको रोक दिया, आपने उनको जाने नहीं दिया, ये वो, उन्होंने आपको कई कॉम्प्लीमेंट्स दिए. उसके 2 दिन के अंदर आपने पूरे कांग्रेस पार्टी को बीच से तोड़ दिया आसाम में, और आपने कहा ये मेरा रिटर्न गिफ्ट. यू सेड व्हाट इज इट? इट इज माय रिटर्न गिफ्ट टू कांग्रेस. ये मैं बात बोलिए, रिटर्न गिफ्ट ही बोलिए. बर्थडे में गिफ्ट देने से आपको यू गेट अ रिटर्न गिफ्ट आल्सो. क्या चल रहा है आपके? आप देखिए, राहुल लॉन्ग राइवलरी. मेरा बात अलग था. मैंने राहुल गांधी जी को बोला था, आई हैव रिक्वेस्टेड हिम थ्रू डिफरेंट चैनल, कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है. This is Republic Niva Bhupa Studio, your one stop for all the breaking updates. I am Rakshita Mishra. पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित भारत, इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है. आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है. नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन
अष्टलक्ष्मी का रहा है। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड, टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है। मोदी की गारंटी, ये तो सुन ही रहे हैं आप लोग। लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, ये जरा अरुणाचल में आएंगे ना, इतने दूर सुदूर आपको साक्षात नजर आएगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है। अब देखिए 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था, याद है ना, 2019 में। और आज क्या हुआ, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये गारंटी पक्की गारंटी है कि नहीं है? साथियों, कांग्रेस ने तो बॉर्डर के गांवों को भी नजरअंदाज कर रखा था। उन्हें देश का अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था। हमने इन्हें आखिरी गांव नहीं, मेरे लिए तो ये देश का प्रथम गांव है, प्रथम फर्स्ट विलेज। और हमने प्रथम गांव माना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू कर दिया। एक तरफ मोदी विकसित भारत के निर्माण के लिए एक एक ईंट जोड़कर युवाओं के बेहतर फ्यूचर के लिए दिन रात काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ, और मैं दिन रात कहता हूं तो मुझसे ज्यादा लोग कहते हैं कि मोदी जी इतना काम मत करो। आज ही मैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बंगाल और उत्तर प्रदेश 4 राज्य में कार्यक्रम करने वाला हूं एक दिन में। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने, जब ये मैं काम कर रहा हूं ना, तो उन्होंने जरा मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं। और आजकल लोग पूछ रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन है? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कान खोल के सुनो गाली देने वालों, ये अरुणाचल के पहाड़ों में रहने वाले हर परिवार कह रहा है ये मोदी का परिवार है। मोदी के बाद से लेकर 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में, यह आंकड़ा याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट में 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए थे, यानी 7 दशक में। जबकि बीते 10 वर्षों में, सिर्फ 10 वर्षों में 6,000 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। जितना काम 7 दशक में हुआ, उतना मैंने 1 दशक में करीब करीब किए दिया है। 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में करीब 2,000 किलोमीटर नई रेल लाइन बनी है। पावर सेक्टर में भी अभूतपूर्व काम हुआ है। आज ही अरुणाचल में दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और त्रिपुरा में एक सोलर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। दिबांग डैम देश का सबसे ऊंचा डैम होने वाला है, यानी भारत के सबसे बड़े पुल की तरह ही सबसे बड़े डैम की उपलब्धि भी नॉर्थ ईस्ट को मिलने जा रही है।
I am very, very happy to announce that Niva Bupa Health Insurance has come on board as Republic TV's studio model. Niva Bupa Health Insurance is the fastest growing company among standalone health insurance players in India. It has also provided health insurance coverage to 1.1 crore people in India and settled over 15 lakh claims, processing one claim every 60 seconds. So we are delighted to be partnering with them. Himantada, I must first congratulate you for being one of the rare politicians who can get a post-lunch audience of this size. It's time now for a virtual interaction with an individual who has dared to scale. His style of entrepreneurship has been a source of inspiration to many. He has successfully powered his vision to scale with the restless passion to adapt to evolving trends. He's been a big believer in green and clean energy in industry, championing sustainability and environmental responsibility every step of the way. Through his visionary leadership, he has spearheaded initiatives to reduce carbon footprints, promote renewable energy sources, and drive towards a greener future for our planet. He has delivered on aggressive acquisitions, strategically expanding reach and influence in key markets while maintaining a steadfast commitment to working on the larger goal of building a robust Bharat. Ladies and gentlemen, it is time for the founder and chairperson of the RPSG Group, Mr. Sanjeev Goenka, the man of ideas who is scaling up with solidity and purpose, steering us towards growth and prosperity with unwavering determination and vision. India and Indians is unparalleled. It's not only given the world a new confidence in India, a new respect for India, a new respect for Indians, but it's given all of us within India, every Indian, the confidence and belief that we can perform, we can deliver, we can compete. The BJP government has changed the way one operated in India. And it's become so much easier to think global, genuinely think global scales, to manufacture in India, to operate in India, and to grow from India. I must say that we recently, over the last few years, invested a lot in Uttar Pradesh, and I've been blown away by what I see of what's happening in Uttar Pradesh and the leadership provided by Yogi ji. It's absolutely fantastic. Prime Minister Modi is the boss. The man of ideas, Mr. Sanjeev Goenka, thank you for joining us. I'd like to now invite Public Media Network's Editor-in-Chief and Chairman, Arnab Goswami, and the Deputy News Editor and Anchor, Suesha Sawant, to please come up on stage to have an interaction with Mr. Sanjeev Goenka, who joins us virtually. Sanjeev, it's good to see you remotely though. It would have been even better if you were with us in person. I hope you can hear me. Always a pleasure to be with you and at the Republic Summit. Thank you, Sanjeev. Sanjeev, we've been talking to people and stakeholders in business, government, politics, governance, chief ministers. We hope to have the Prime Minister this evening.
how have things changed for you? I mean, you're one of the biggest business houses, most diversified, probably one of the largest from the eastern part of the country, and spread out in India and globally now. You're also doing a lot of work globally. You have global aspirations as well. So can you just look at your story and how have government policies impacted you, if at all, in the last, say, 10 years? And how do you look to the next 10? Arnab, quite honestly, India under Modi is a different India. It's a confident India. It's an aspirational India. And it's an India that wants to not only conquer the world, but rule the world. I think it's thanks to the Prime Minister and the policies of this government that every one of us in business has started thinking global, has started thinking scale, has started thinking of while you locate manufacturing in India, you manufacture for the world. The approach has changed. The scales have changed. The aspirations have changed. And of course, the policies have changed. It has become easy to do business in India. And very importantly, India is viewed with a huge degree of respect across the world, as indeed are Indians. And that is thanks to Modi. I am a firm believer in Modi hai to mumkin hai. Sanjeev, tell me, we've spoken about this and you're very keen to explore things globally. When we say we travel abroad now, we see a different level of respect. The relationships are different at a personal, professional and business level. Indian companies are thinking of going abroad. As one of the biggest business houses in the country, as one of the biggest business personalities of the country, Sanjeev, our theme is Dare to Scale. Are you looking at going global, and how do global players relate to you now? When you talk to your global partners and global investors and other stakeholders, how do they relate to you now? Can you give us anything anecdotal about this? You know, in the past, when you introduce yourself as an Indian company, if you were a Ratan Tata or a Mukesh Ambani or a Gautam Adani, it was different. But for most other companies originating out of India, you didn't even get an audience at the senior most level. Some middle level guy would see you. Today you get an audience at the senior most level. And that is the difference that Modi and his government has brought to the perception of India. Oh, that's huge. Now, you're taking risks. I'll take one more question and hand it over to you, Swesha. But I'm very keen to know, you see, people say, are people investing in India? Are Indian houses investing abroad? Are they parking their capital abroad? But you have done the opposite. You are going to acquire Aquafarm Chemicals company for 3,800 crores. And congratulations, last month you acquired a 4,000 crore company in the chemicals business. So, you know, you're always making about 10,000 crores of investment between these two decisions. And obviously, when a businessman invests 10,000 crore rupees, he wants a return. And there is a mammoth amount of risk that is involved. Is this investment possible without a solid foundation, without what you would call a good climate? Can you talk about the climate in which things are happening which allow you to take these fearless decisions? You know, any of these decisions happen on the basis of policies, on the basis of the environment, on the basis of the confidence you have on the administration. And I think that confidence is so huge that people are actually becoming not only ambitious, but as you said, fearless in taking investment decisions. You're talking cautiously still, Sanjeev, but I just wanted you to make this point because, and I'll say this to the audience, you would be hearing this, that
Sanjeev, if I can just take a detour and give my own. Sometimes we hear that, things are difficult. The government wants a lot of compliance. Taxes are being followed. Businessmen are feeling insecure. Indian businesses are leaving India. People are leaving their Indian citizenship. More Indians want to stay in Dubai than in India. But Sanjeev Goenka still continues to do almost all his business in India. And if he's going abroad, it is for business reasons, for investment. So he's a classic example of a person. So don't believe the story if somebody tells you that businessmen don't want to be compliant. I think that's a living example of that story. Congratulations to you, Sanjeev, for that. That's a really good thing that you're doing. Swesha takes the next question. Swesha. In fact, Mr. Goenka, I want to make a point further to what Arnab just said about the acquisition of the 4,000 crore company in the chemicals business. You just spoke about favorable government policies. How do you manage to converge that with an astute group strategy? And how does this diversification complement the group's mission towards sustainability? What are your long-term plans on that? This company is actually producing something called green chelates in addition to phosphonates. Green chelates is the most green version of detergents that you can get. And Aquafarm is one of the 2 companies in the world which has this technology. It's very easy to scale up from here, and this is as green gets. I mean, we have the world majors who are our consumers and potential clients who are waiting to get this product. Right, and you take a lot of pride in Indian roots. You're also very high on Ayurveda and the ancient legacy of it. What are the company's plans to take Ayurveda to the international realm now? So we are going to launch Indian Ayurveda in a modified, easy to consume form towards the end of this calendar year in the US. So for example, a traditional kadha as we know it will not be sold as a kadha but will be sold as an infusion. The normal chavanprash, the normal shitopaladi will be sold in gummy form. So it's all easy to consume. It's the same formulation, but just made easy to consume. Can I take the next? Yes. Sanjeev, you are a 200-year-old group if you look at your whole history. And you have a big asset base. You have a $7 billion asset base. You have solid revenue flow. You have, I think, of over $4 billion annually revenue flow, 4.3 billion, I'm told. So you should be in a good position to be looking at areas where the growth will be. I'm sure you don't believe in sitting on capital. I'm sure you believe in investing, and you're investing, you're going into different areas. So I'm very curious to know, and many businessmen, entrepreneurs will be keen to know what are those areas which someone as savvy as Sanjeev Goenka will invest in. You're going into some areas, some element of FMCG. You've gone into a bit of media, and you've acquired an IPL team, which I don't think was a business decision. It was more an emotional decision. But having said that, what are the areas in which Bharat over the next decade will see exponential growth? You know, green energy is one business where you will see huge growth. So we are investing in solar generation, in wind generation. In fact, we have said that about 60 to 70% of the power that we distribute in the 6 cities that we have the license to operate will be green. We are going to get into hydrogen electrolyzers. We are exploring this area in a very strong way. That's one. Green chelates is another form of completely green product. Ayurveda is again as green as it gets. So we are looking at green as the path forward. We do believe that is the way to go. I'd just like to mention your comment on the IPL team. Yes.
meant to provoke I've you. heard this before, that it was not a business decision. Yes. But let me just say that I paid 7,000 crores for the license. 2 years later, I sit on more than one offer at a value of 14,000 plus. So you're saying that investing 7,000 crores in Lucknow Supergiants is a business decision? Well, out of the 7,000, I've said this before and I'll say this again, 6,100 was something that came out of a calculation done by our advisors and financial consultants. And 100 crores per year was the passion element. Don't worry, I'm just provoking you. I'm just pulling your legs, Sanjeev. Don't take me seriously on this one. Let me have some fun. It's been a day of serious conversations, and I think I have the ability to pull your leg once in a while. We go back a long enough way to do that. But what are you doing? For I mean, sure. are people like you and Gautam Adani, Mukesh Ambani, I'm sure, and other major, the Birlas, are you doing enough to generate entrepreneurship? That's my first question. And my second question is, how do you view people who are running behind valuation? You see, Sanjeev, you're a 200-year-old company. Today, everybody wants to be a billionaire within 6 months. Everybody is after this valuation game. And running behind the valuation game, you've seen what happened to certain companies in recent days, like Byju's and others, So, please answer both these questions. It's important that we must have the right ethics when we are running a business. So 2 questions. Are you really doing enough to grow entrepreneurs from your side as a company, as an individual? And C, what do you make of this running behind billions instead of building sustainable businesses? Arnab, if you build sustainable businesses which are profitable and growth oriented, you will make billions. A concept can give you a head start, but if it is not sustainable, if it is not cash accretive, if it is not stakeholder remunerative, you are not going to get valuations which are sustainable. So I, for one, am not a great believer in these very fancy kind of media hype that gets created over certain companies. But having said that, look at the number of companies which have started from scratch and have done so admirably. There's so much to be learned from that zeal, from that spirit, from that never say die attitude. You talked about Mukesh and Gautam Bhai and Kumar. They're in a scale way above mine. Mukesh is somebody I've unabashedly said is like my guru. He's somebody I look up to. He's somebody I try to follow. But they are there, I'm here. So, as far as I'm concerned, as far as we are concerned, we've started a small venture capital fund for FMCG, where we are not investing in startups, but second stage startups. And we are not only putting capital, but we are giving management expertise, and we are helping these companies scale up. So it's a small thing, it's not enough, but it's a beginning. That's really good. And I think that's excellent. And I think it's good that you're also investing in the media, because that's where commitment and impact investing is happening. So I think it's all good. We look up to you. I think you're a very grounded person. And I think, you represent traditional values. I think your next generation is going to take it to the next level. And we're always proud to be associated with you and to speak to you. So, Swesha, may you close, Absolutely. Please. And in fact, furthering this point, there are also businesses that are struggling to stay relevant. You have a 200-year-old legacy group. You've seen governments change one generation after the other. How do you manage to evolve, innovate at every step? We are talking about Bharat, the next decade. What is the game plan for RPSG in the decade to come? Frankly, I'm not thinking of a decade. It's the whole planning horizon has narrowed down. So over the next 3 years, we are investing about 55,000 crores, mostly towards green projects. That's committed,
and that's at various stages of takeoff. And we'll take the next step. We'll start planning on that 12 months from now. So, 3 takeaways from this conversation, Swesha, that I carry. 1, invest in India. Big Indian businesses are investing in India. This theory that big Indian businesses and successful businesses want to leave India because of compliance issues is completely wrong. Absolutely wrong. Second big takeaway is invest in value creation, not valuation. And I think that's very important. And third is, from talking to him, remain grounded. Thank you very much. It's been an absolute pleasure, and look forward to seeing you soon, Sanjeev. Thank you, Sanjeev. Lots of love. Thank you. Thank you. अगला सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल मेरा यह है कि पिछले 5 साल में गृह मंत्रालय ने FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई की है। होम मिनिस्ट्री का अपना डेटा है कि 16,000 एनजीओ जो है उनके FCRA लाइसेंस को कैंसिल किया गया है। उसके साथ साथ टेरर फंडिंग, एनजीओ फंडिंग पर रोकने की कोशिश हुई है, लेकिन शायद पूरी सफलता नहीं मिली। इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है? एक तो जो ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड सेल होते हैं, नेक्सस है, इसके फॉर्मूले को तोड़ने की कोशिश है या एनजीओ को टारगेट किया जा रहा है, वो कहते हैं। तो इस पर अगर आप देखिए, अपनी अर्णब जी, आप 2 चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। अच्छा, FCRA को हमने कानून में परिवर्तन किया। कानून को में परिवर्तन करने का हमारा उद्देश्य था कि FCRA का उपयोग कर विदेशों से चंदा लाकर, डोनेशन लाकर इस देश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास नहीं होना चाहिए। एक, सेवा के लिए अगर कोई पैसा भेजता है, सेवा कार्य के लिए करता है, व्यक्ति समूह के उत्थान के लिए भेजता है, तो उसका स्वागत है। हमने कठोर नियम बनाए, ऑडिट कंपलसरी किया और ऑडिट को रेगुलर किया। इसके आधार पर ये सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं। कुछ लोगों ने तो 16,000 में से 12,000 लोगों ने स्वतः ही कैंसिल करा दिया। भारत सरकार ने नहीं किया है, वो स्वतः विड्रॉल का अर्जी डाले हैं। तो 4,000 ऑडिट के आधार पर कैंसिल किए हैं। तो जो लोग हाय तौबा करें, उनको मेरा यही कहना है कि कानून की परिधि में रहकर कोई भी व्यक्ति कितना भी चंदा विदेश से लाए, भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। वो देश के नागरिकों के और देश के समाज के उत्थान के लिए खर्च होना चाहिए। देश की जनसांख्यिकी बदलने के उद्देश्य से खर्च नहीं होना चाहिए। अगर जनसांख्यिकी के बदलने के उद्देश्य से खर्च होगा तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, इसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। जहां तक टेरर फंडिंग का सवाल है, 1914 से हमने टेररिस्ट एक्टिविटी और टेररिस्टों के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के क्रमबद्ध कदम उठाए हैं। हमने NIA को, ED को, दोनों को टेरर लिंक्स, हवाला के जरिए पैसा आने वाले टेरर फंडिंग और नार्को टेरर लिंक्स को पकड़कर उसको खत्म करने की दिशा में एक्टिव किया है। सैकड़ों रेड्स हुई हैं और बहुत कठोरता के साथ उनके फंडिंग के फ्लो को बहुत पतला करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। ऐसी चीजें जो सार्वजनिक चर्चा में नहीं आती है, मगर मैं कहता हूं कि मोदी जी की सरकार की बहुत बड़ी सफलता है कि हमने टेररिज्म के लिए आने वाले फंड को लगभग सूखा नहीं दिया है, समाप्त कर दिया है। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता। इसी से जुड़ा सवाल कि नक्सलवाद से भारत को और भारत के लोगों को संपूर्ण छुटकारा कब मिलेगा? देखिए, मैंने कहा है, पहले भी कहा है कि 3 साल के अंदर, आने वाले 3 साल के अंदर, इसका मतलब मोदी 3 में देश नक्सलवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय रखने की जरूरत 3 साल। Himantota, I must first congratulate you for being one of the rare politicians who can get a post-lunch audience of this size. It's incredible how popular and viral you've become. It's actually incredible. I mean, you know,
Now, earlier you and I, when we spoke in Hindi, people would make fun of both of us because our Hindi is bad. Now they expect us to speak in Hindi. But Ibonadav, how do you handle your popularity? At a national level, wherever you go, you get crowds when you go to Andhra Pradesh, you get crowds when you go to Uttar Pradesh, and of course you get crowds when you go to Bengal. I think my Hindi attract people. तो हिंदी में भी बात करेंगे आज. नहीं ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए एकदम. I have had the privilege of knowing you personally for a long time and I have watched your career. Now you come across and everybody who's listening here, बड़े balanced व्यक्ति हैं, ठीक से प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी है, असम की इकोनॉमी बढ़ रही है. मैं भी हिंदी में ट्राई कर रहा हूँ. कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो बता दीजिए. होना चाहिए मिस्टेक थोड़ा. मैं दिल साफ है, जबान साफ नहीं हो मगर दिल साफ है. ये कानून में क्या लिखा था कि छोटे बच्चा का भी विवाह होते हैं तो जो काजी बोलते हैं दे कैन रजिस्टर द मैरिज एंड दैट मैरिज बिकम लीगल. ये कानून में वो लिखा हुआ था. हमने जो बाल विवाह का खिलाफ काम किया, हाई कोर्ट एनलर्स मेनी ऑफ देम ऑन बेल सेइंग दैट इन मुस्लिम रजिस्ट्रेशन एक्ट registration of child marriage is genuine and it is a bona fide, it is legal, so you cannot arrest. So then हमने जाके कानून को जो असेंबली ने पारित किया था उसी असेंबली से हमने खारिज किया और बाद में खारिज करने के बाद सबसे तो मशवरा होते ही रहता है. खारिज करने के बाद. This is Republic Niva Bupa Studios, your one-stop destination for all the breaking news updates, and I am Shivangi Shukla. पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित भारत, इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है. आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है. नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्टलक्ष्मी का रहा है. साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड, टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है. मोदी की गारंटी, ये तो सुन ही रहे हैं आप लोग. लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, ये जरा अरुणाचल में आएंगे ना, इतने दूर सुदूर आपको साक्षात नजर आएगा. पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है. अब देखिए 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था, याद है ना, 2019 में. और आज क्या हुआ, बन गया कि नहीं बन गया, बन गया कि नहीं बन गया. क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये गारंटी पक्की गारंटी है कि नहीं है? साथियों, कांग्रेस ने तो बॉर्डर के गांवों को भी नजरअंदाज कर रखा था. उन्हें देश का अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया था. हमने इन्हें आखिरी गांव नहीं, मेरे लिए तो ये देश का प्रथम गांव है, प्रथम फर्स्ट विलेज. और हमने प्रथम गांव माना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू कर दिया. एक तरफ मोदी विकसित भारत के निर्माण के लिए
एक एक ईंट जोड़कर युवाओं के बेहतर फ्यूचर के लिए दिन रात काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ, और मैं दिन रात कहता हूं तो मुझसे ज्यादा लोग कहते हैं कि मोदी जी इतना काम मत करो। आज ही मैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बंगाल और उत्तर प्रदेश 4 राज्य में कार्यक्रम करने वाला हूं एक दिन में। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं ने, जब ये मैं काम कर रहा हूं ना, तो उन्होंने जरा मोदी पर हमले बढ़ा दिए हैं। और आजकल लोग पूछ रहे हैं कि मोदी का परिवार कौन है? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कान खोल के सुनो गाली देने वालों, ये अरुणाचल के पहाड़ों में रहने वाले हर परिवार कह रहा है ये मोदी का परिवार है। मोदी के बाद से लेकर 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में, ये आंकड़ा याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट में 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए गए थे, यानी 7 दशक में। जबकि बीते 10 वर्षों में, सिर्फ 10 वर्षों में 6,000 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। जितना काम 7 दशक में हुआ, उतना मैंने 1 दशक में करीब करीब किए दिया है। 2014 के बाद नॉर्थ ईस्ट में करीब 2,000 किलोमीटर नई रेल लाइन बनी है। पावर सेक्टर में भी अभूतपूर्व काम हुआ है। आज ही अरुणाचल में दिबांग मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और त्रिपुरा में एक सोलर प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। दिबांग डैम देश का सबसे ऊंचा डैम होने वाला है, यानी भारत के सबसे बड़े पुल की तरह ही सबसे बड़े डैम की उपलब्धि भी नॉर्थ ईस्ट को मिलने जा रही है। साथियों, आप भी जानते हैं ये समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है, और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है। उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी। पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है। मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं, मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं। भारत ने ये साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स के साथ ही गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है। साथियों, आज एक वैश्विक जिज्ञासा, ग्लोबल क्यूरियोसिटी है कि भारत ने ये कैसे किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा
Hello and welcome. You're watching Live and Breaking with me, Gini Nurula. Let's listen to the headlines first. It's a political Sunday in UP's Azamgarh. Prime Minister Modi to visit Akhilesh's stronghold ahead of Lok Sabha polls.